That is Dubai frame, endless frame. ये है सुबह सुबह की जंग। ये जुगाड़ किया गया है। ये स्टील स्ट्रॉ से पानी से ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि वी कांट ओपन द लिड, इट्स नॉट अलाउड। फिर ये ट्रांसफ़र हो रहा है केटल में और फिर ये बॉटल्स में। आज का हमारा ब्रेकफास्ट है वर्मिसली। Hi everyone, so this is day 4 and we are ready to go out, and today we are going to Dubai frame and few other things, so let's see. अच्छा डे फॉर लक। और आज हम लोग जा रहे हैं दुबई फ्रेम, दुबई क्रीक एंड ग्लोबल विलेज And Dubai. एंड बर्न लॉट ऑफ प्लेसेस इन आवर आइटिनरी। ये तो हमारे पैर काफ़ी दुख गए थे चल चल के, तो आज फाइनली हमने सोचा बात कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू दुबई फ्रेम। Arrived at Dubai frame and it is Sunday and it is pretty crowded. I would recommend not to visit here on the weekend. We have to because we are left with no choice. So we are at the entrance of the Dubai frame and we have got the online tickets, so we are going directly towards the entrance and And then we will stand. ये है हमारे ब्लॉगर्स। चलो 65 minutes waiting. Come this side, madam. 65 minutes waiting. So found this at Dubai frame where you can refill your bottles from. It is the first one that I am seeing here. Otherwise you have to purchase the bottles here. Massively. So we are standing in a huge queue. इतने दिन से हम धूप धूप कह रहे थे कि दुबई में धूप नहीं आ रही है और अब हम धूप में खड़े हैं। जरूरी है। धूप जरूरी है। मुंबई में आए धूप में मिली। Now we're climbing up from there.
go up. Welcome to guests, welcome to the dresser zone. Guests right there at the top of it, 150-meter high, 40 and 40 the smart class, sitting, running, jumping is not allowed. You can walk, exit on top of this side, from the top also be hold the knee one. So we entered from that side. On the left side is Old Dubai, and on the right side is New Dubai, skyscraper Dubai. And that is Burj Khalifa. Now finally heading back. Hotel in Dubai. Hotel in here. So Dubai. Exited from here, and this is the exit. And it smells very nice here. Smell is good, na? Something to play with. Oh, this is beautiful. Special properties of the glass change when a voltage is applied, like magic. The glass floor changes from translucent to transparent when a person walks over it. This frame from here it costed about 125 or 150 dirhams. So it's a photo and a frame. And a lot of souvenirs you can take from here. A lot of framed souvenirs are available here. A lot of frames in which you can fill your photo. Empty frames. Frame pencils. Postcards. Mugs. Pencils with the frame. And this cute little bubble. We are exiting Dubai frame. The reflection is so khatarnak, so khatarnak. तो glare आ रहा है. That was Dubai frame. It costed around 60 AD per person, around 1200 rupees, and I think it's worth it. इतना ज़्यादा costly नहीं है. In Dubai again, and यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना है, souvenirs लेने हैं, और maybe कुछ और electronics purchase करना है, new memory cards and stuff. So let's complete that and then head towards Dubai Creek.
और ये सेकंड परचेज पार्ट 2 चलो फाइनली लैपटॉप सारी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग हो गई है। तुम्हारा है ना? मेरा गैजेट प्रो हो चुके हैं दुबई में। स्वाति का। अच्छा, इट्स अ गिफ्ट टू हमारे सब कंबाइंड है, हमारा है। इट्स ऑल हमारा, हम यहाँ मैं नहीं आता, मैं नहीं। और तुमने क्या लिया भाई? ओ छुपे रुस्तम, छुपे रुस्तम। इसलिए तो मैं कह रहा था कि नहीं नहीं मत आओ मत आओ, यहाँ पे मत आओ, भगा रहा था हम लोग को। तुम्हारा काम हो गया? नहीं, अगर नहीं आते ना तो मैं नहीं लेता। जब कम तो मैं ले लेगा, भगवान ने दूसरा मौका दिया है। So after electronic shopping again, now we are going to Saruna Bhavan. Saruna Bhavan पे कॉफी क्या खाओगे? डोसा। डोसे? क्या हो गया? टेंशन हो रही है कि पूरे साल भर का खर्चा कर दिया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब पूरा साल हाइबरनेशन मोड ऑन। और ये आ गया है हमारा डोसा बड़ा सरुना भवन पे। लिया कॉफी और हम पहुंचने वाले हैं नियरेस्ट क्रीक। क्या नाम था? दुबई क्रीक। नॉट दुबई क्रीक, इट इज नॉट दुबई क्रीक, इट्स नॉट दुबई क्रीक। दुबई क्रीक। झूठ। ये क्या नाम था उसका? अल समथिंग था, मैं देखती हूँ क्या नाम है। लस्सी। ये वो देखो अल्फाइदी। सो बट दुबई मार्केट के थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस, जिस थोड़ा सा 500 मीटर्स पे ये अल गुबाइबी मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन एंड दिस इज़ द मैप। तो यहाँ से हम लोग ये ले सकते हैं राइट, बोट्स कहीं जाने के लिए, नहीं पता कहाँ जाने के लिए। ऑन द राइट साइड इज़ अल फहीदी और ये कैनाल है to travel between the stations, I think so. And on the left side is the old architecture of Dubai. And you can rent a bike using Careem bike app. And you can do cycling. Starts from here one end and it is all along this canal until there. Huge walk that you can take. So behind us is Al फहीदी। Fahidi. Yes, Al Fahidi. And if you are in This is Dubai, Dubai Creek. this is not Dubai Creek. It's not Dubai Creek. This is Al Fahidi. और यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है रात को। So after all your shopping, you can come here, sit, relax or take a walk. शॉपिंग एट मीना बाजार। Shopping at Meena Bazaar. तो इसमें बताइए कि शुभांगी का लुक आपको कैसा लगा था? माय लुक। This is वो निम्मो वाला सीरियल नहीं आता था, एक निम्मो नाम सुना सा यहाँ पे बांधती थी अपनी चोटी। ये पूरा अंदर का भी एरिया है एंड दिस इज द मेट्रो स्टेशन। अल गुबाइबी मेट्रो स्टेशन और उसी के बगल में पूरा ये क्रीक वाला एरिया है।